So, students, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. The class Ethics and Values, Part 6. ଆମେ ଗତକାଲି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା କେଉଁଟା ପିଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିମେନ୍। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଗୁଣ ସବୁ ରହୁଛି ଭାରତରେ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଝିଅମାନେ କିଭଳି ସଫର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ଆଜି ପଢ଼ିବା। So child marriage is a common practice in many South Asian countries. Child marriage ବା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ is a common practice. ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ଯାହା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି in many South Asian country. ଦକ୍ଷିଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଏସିଆରେ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। Girls are most vulnerable to this practice and girls are most vulnerable to this practice. এই जो ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା এই ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅତୀବ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଝିଅମାନେ। It refers to giving in marriage a girl before she attains the age of 18. So what is child marriage? If there is a question in your mind, child marriage is nothing but it refers to giving in marriage a girl before she attains the age of 18. 18 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହେ? ତାହାକୁ ଆମେ କୁହେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା। So gender inequality, poverty, social norms and insecurity promote the practice of child marriage. So what does practice? Why this child marriage do happens in our society? এই প্রশ্নর উত্তর হচ্ছে জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি, লিঙ্গগত অসমানতা, পভার্টি দারিদ্রতা, সোশিয়াল নর্ম সামাজিক বিধি ব্যবস্থা এন্ড ইনসিক্ୟୁରିଟି নিরাপদ মানে নিজକୁ নিরাপদ মনে ন করিবা। এই জিনিস সব প্রমোট করে প্র্যাকটিস অফ চাইল্ড ম্যারেজর ব্যবস্থাকে মানে প্রমোট করছে এই সব জিনিস। এট মেনি প্লেসেস ইন ইন্ডিয়া মানে ভারতর বহুত জায়গায় এট মেনি প্লেসেস ইন ইন্ডিয়া এন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইভেন ই বিশ্বরে गर्ल्स आर मैरिंग एट ए वेरी टेंडर एज कहले कम एज पिले तो झील मान बहुत स्वल्प बयस बाहा कर दिया जाउची। चाइल्ड मैरेज वायोलेट्स चिल्ड्रन राइट्स टू एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एक्सपोज देम टू हाई रिस्क ऑफ वायलेंस। सो रिमेंबर व्हेन ए गर्ल इज गेटिंग मैरिड below when she is just below 18 years, at that time what happens, it violates children rights. प्रथम जिनस शिशु मानकर जो अधिकार आईन अच्छी तार उल्लंघन होची। देन एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एंड हेल्थ, स्वास्थ्यर अधिकार शिक्षार अधिकार भी एठी उल्लंघन होची। एंड ऑल्सो एक्सपोजेस देम टू हाई रिस्क ऑफ वायलेंस, झियो माने हिंसार शिकार भी होचंती एई बाल्य विवाह प्रथा द्वारा बा शिशु विवाह प्रथा द्वारा। Exploitation and abuse and increasing cases of exploitation and abuse. Exploitation कहले शोषण, then abuse कहले गाली बंद करिबा बा टर्चर करिबा। It generates poverty and gender inequality, and by this system of marriage generates poverty and gender inequality. माने दरिद्रता बढ़े एवं लिंगगत असमानता भी वृद्धि पाए। चाइल्ड मैरिज अफेक्ट्स बोथ गर्ल्स एंड बॉयज एंड यू कैनॉट टेल दैट ओनली गर्ल्स आर सफरिंग ऑफ दिस सिस्टम। बॉयज आर also in partial, boys are also exposed to this system, but it affects girls disproportionately. किंतु झील मानकर माने पुआ मानक तुलन में झील मानकर संख्या अधिक, झील मान ही बेसी एक्सप्लोइट होचंती ए केस रे। And this is a form of forced marriage without the consent of the girl. And this marriage, whenever a girl is marrying under 18 age, you can consider it as forced marriage. याकू माने बलपूर्वक विवाह करिबा व्यवस्था बोली भी कुआ जाई परिबो। In some countries, किछिटा देश रे, in some countries what happens, girls as young as 7 or 8 are forced by their families to marry men much older than them. माने 7-8 वर्षर झियो, in some countries, not in all countries,
किछिटा देश रे 7-8 वर्षर झील मानू विवाह कर दिया जाउची तांको ढेर वयस्क पुरुष मान सह. Parents prefer to get their daughter married early due to poverty. What is the reason behind this then? The reason is obvious and crystal clear, that poverty. Due to poverty. And ଆଉ କ'ଣ customary practice, प्रथा और परंपरा, चाली चलणी बा विश्वास मतवाद. Then, and to ensure protection of their daughters from sexual assault. जे मो झील केमिति सेक्सुअली असल्ट न हबो, अन्य लोकंक द्वारा एक्सप्लोइट न हबो, that is also one reason. That's why fathers are getting married their daughter. But एते सत्वे एई सब जिंस होतवा सत्वे they forget and fail to understand that child marriage itself exposes girl to sexual exploitation. The parents, they are forgetting that child marriage itself exposes girls to sexual exploitation. तो यह द्वारा भी झील मानकर माने शोषण होउची, यौन शोषण जहाँ कहवा जदि शुद्ध ओडिया कहवा सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन भी होउची. एक कथा बापा माँ भूली जाउछंती जे एई एज रे छुआ को बाहा कर दवा द्वारा भी तार सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन होउची. गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, आम जो सरकारी विधि व्यवस्था अच्छी, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, कैंपेन्स एंड पब्लिक अवेयरनेस. कैंपेन्स या विरुद्ध संग्राम भी चली, अवेयरनेस सचेतनता भी सृष्टि कराउची. along with the education of the girls have led to a decline in the number of child marriage in the country. So those things that I told earlier, one is government legislation बा आईनगत विधि व्यवस्था. 2 नंबर जिनस होउची कैंपेन्स, प्रचारो प्रसार है. देन कम्स पब्लिक अवेयरनेस. कंसेंट मैरिज मीन्स व्हेन बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स आर एग्री टू मैरी ईच अदर, when opinion of both girls and boys are being taken into consideration and thereafter marriage is fixed, that is called consent marriage. I think you got your answer. So awareness along with education of the girl have led to a decline in the number of child marriage in the country. तो यही सब रीजन लोग माने झील मैंने पाठ पढ़ुंट, कैंपेन करा जाउची, से माने सचेतन होउचंती, एजुकेटेड होउचंती, एते सब हैला परे वर्तमान धीरे धीरे डिक्लाइन होउची, कम होउची एटा इन द कंट्री. बट इट हैज नॉट येट बीन फुल्ली स्टॉप्ड. किंतु वर्तमान पर्यंत यह संपूर्ण रूप से बंद है नहीं. In many areas, in बहुत अंचल रे, in many areas, especially in tribal and rural pockets. Tribal माने पहाड़िया दुर्गम अंचल एवं गाँ गहली रे. Tribal and rural pockets, it is continuing phenomenon. Still it is going on. वर्तमान भी यहाँ चाली ची. ठीक अच्छे पिले. Irrespective of such laws, एते सब आईन हवा सत्वे. Irrespective of such laws, action plans, child marriage is still rampant in our country. Rampant कहले कौन भावे बहुल भावे प्रचलित. एते सबु नियम, एते सबु विधि व्यवस्था थिबा सत्वे, सचेतन लोक मानकु करेवा सत्वे भी बाल्य विवाह प्रथाटा एबे भी चाली छे. Child marriage is still rampant in our country. Customary practice, प्रथा और परंपरा, चाली चलणी है. So supersede legal provisions prohibiting it. Legal provision आईन रो व्यवस्था को लोक माने कौन कहउचंती नाही हमर पूर्व पुरुष रे एभली चालुतला एबे भी चालिबो. तो आईन ता बाटरे जीवो, मोर परंपरा मो बाटरे जीवो. एई जो जिनसटा अछि एबे भी माने प्रथा और परंपरा आईन रो ऊर्ध्वरे बोली लोक कहउचंती. This becomes vividly clear from the following practice. I'll tell you. So according to a United Nations report, जदि रिपोर्ट देखिबा पहिले स्टैटिस्टिक्स देखिबा, according to a United Nations report, India records the second highest number of child marriage. सारा विश्व रे भारत तो 2 नंबर अछि बाल्य विवाह प्रथा रे. यूनाइटेड नेशन रो रिपोर्ट अनुसार. नंबर 2 द यूनिसेफ रिपोर्ट 2019 रे यूनिसेफ जो रिपोर्ट देइथिला स्टेट्स दैट इंडिया इज होम टू 2.23 million child rights. 2.23 million. So पाखापाखि
22,30,000 बाल्य विवाहित स्त्री आम भारत में। एंड दिस इज 1/3 ऑफ द ग्लोबल टोटल। विश्वर समस्त बाल्य विवाहिता मान को जदि हिसाब को निया जाए एटा होची 3 भागरु भागे। आउ कौन देखिबा, ओवर 47% ऑफ माइनर गर्ल्स इन इंडिया गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। 47% ऑफ माइनर गर्ल्स इन इंडिया गेट मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18। 18 वर्ष पूर्व 47% झियो बाहा ही जानते। 47%। लुक एट दिस नंबर गाइस। 7%, that is 102 million girls marry before the age of 15. 7%, that is 102 million girls marry before the age of 15. 15 वर्ष पूर्वरु 102 मिलियन पाखापाखि केते हबो 10 कोटी बाहाई जानते। Each year at least 1.5 million girls under 18 get married in India. प्रत्येक वर्षर कथा जदि आमे जीवा, एवरी ईयर 1.5 मिलियन गर्ल्स कहले 15 लाख झियो अंडर 18 वर्ष पूर्व बाहा होचंती भारत रे प्रत्येक वर्ष। ईयर वाइज रिपोर्टेड इज। नेक्स्ट थिंग, द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, रिमेंबर उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश are the frontline states in housing child rights. What are those states? I'm telling the name again: Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Maharashtra and Madhya Pradesh. यही स्टेट मानंगरे, यही राज्य मानंगरे मैक्सिमम बाल्य माने विवाह होची। For the first time in British government had passed the Child Marriage Restraint Act in 1929. भारत रे सर्वप्रथमे ब्रिटिश शासन समय 1929 मसीह यही बाल्य विवाह प्रथा अगेंस्ट नियम प्रचलित होता। मन रखा 1929 मसीह। It was also known as the Sarada Act, and this act of 1929 by the English government was known as Sarada Act. Next, child marriage has been declared illegal according to the provisions of Prohibition of Child Marriage Act PCMA 2006. 2006 रे जो चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रचलित हला भारत रे, या अनुसार यह इल्लीगल आईनगत अपराध। This act is meant to prohibit child marriage rather than merely restrict them. रेस्ट्रिक्शन न होया, संपूर्ण भावे मना करा जायछि जे कोनोसी प्रकारे बाल्य विवाह एक्सेप्टेबल नो। नेक्स्ट, अंडर दिस लॉ, यही आईन अनुଯାयी, अंडर दिस लॉ चिल्ड्रेन हैव द चॉइस टू डिक्लेयर देयर मैरिज void within 2 years of reaching adulthood. यही नियम अनुसार झियो 18 वर्ष माने 20 वर्ष 2 years पर 18 रु 20 वर्ष भितर झीर इच्छा अनुसार झीर विवाह हम, नचेत ताहा फोर्स मैरिज बोली कहा जिवो। दैट इज वायोलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 imposes, and according to this act PCMA 2006 imposes a fine of $1,535 कहले पाखापाखि 1,20,000 टंका फाइन दबा पे पड़िबो जदि किए कार केस प्रूफ हो जाए। A national action plan to prevent underage marriages was drafted. What are there? A national action plan to prevent underage marriage was drafted by the Ministry of Women and Child Development in 2013. 2013 मसीह रे कौन जी बिले नेशनल एक्शन प्लान गोटे जातीय नीति प्रणयन होइछि। ए नेशनल एक्शन प्लान टू प्रिवेंट अंडर एज मैरेजेस माने बयस पूर्वर जो माने बाहागर करछन्ते बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट
मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आमर जो नारी एवं शिशु विकास मंत्रालय रही मिनिस्ट्री रही ता द्वारा कौन नेशनल एक्शन प्लान गोटे तैयारी कौन करने टू प्रिवेंट अंडर एज मैरेज इन द ईयर 2013 2013 मसीह This action plan focuses on law enforcement. आउ यही एक्शन प्लान टा कौन कर दिस एक्शन प्लान फोकसेस ऑन लॉ एनफोर्समेंट आईन केमती कार्यकारी हम आईन द्वारा केमती से जिनस को अटका जाई परिबो सेहि आईन प्रणयन कर चेंजिंग माइंडसेट एंड सोशल नॉर्म्स एंड दिस लॉ मीन्स टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल लोक मानकर माने मन भितर परिवर्तन अणाजिब एंड सोशल नॉर्म्स आम जो सामाजिक विधि व्यवस्था अच्छी ता भीतर भी केमती परिवर्तन कर जाई परिबो एम्पावरिंग एडोलेसेंट्स क्वालिटी एजुकेशन एंड शेयरिंग नॉलेज ए रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय लॉ कमिशन इन 2017 ए जो 2013 रे हैला तापर लॉ कमिशन 2017 गोटे रिपोर्ट तैयारी कले recommends making marriage registration compulsory to prevent forced and early marriage तो 2017 आम जानी दरकार जे बाहा जदि बेदी रे भी बाहा होचंती लोक ताहले भी तांका पाखरे मैरेज सर्टिफिकेट रहिबाटा मैंडेटरी कारण मैरेज सर्टिफिकेट जदि लीगल करा जाय पारे मैंडेटरी करा जाय न हुए ताहले मैरेज टा को मैरेज बोली एक्सेप्ट करा जाय पारिबो नाही दैट्स व्हाई दिस इज मैंडेटरी स्टिल आमे एको मानु नाही कारण मैरेज सर्टिफिकेट जो मैंडेटरी हम झील 18 वर्ष आगु के बाहा नहीं तो पे पायल गोटे छोटिया स्टोरी अच्छी स्टोरी कहवा क्लास सारिबा पायल ए गर्ल फ्रॉम राजस्थान वाज जस्ट 11 years old when she took the decisive step of fighting against her family members who were forcing her to discontinue her school education and get married so पायल गोटे झील थिला राजस्थान रो जाको 11 वर्ष जिते बड़े होता से समय ता बापा माँ तार बाहागर ठीक कर देते केते वर्ष बयस 11 वर्ष बयस आउ से समय से झील ता बापा माँ सहित फाइट करथिला से समय सी वाज पार्ट ऑफ कैलाश चिल्ड्रेन फाउंडेशन बालमित्र ग्राम व्हिच एनकरेज चिल्ड्रेन टू टेक डेमोक्रेटिक एक्शन टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन देयर लाइव्स एंड इन द लाइव्स ऑफ द एंटायर कम्युनिटी and she was part of Kailash Satyarthi you might have known the Nobel laureate of India तो तांकर जो कौन बाल मित्र ग्राम जो मूवमेंट थिला तार पार्ट थिला आ से गाँव रे से छोटिया झील 11 वर्षर झील पायल माने समस्त एगेंस्ट रे वॉइस रेज करथिला जे आम गाँव रे बाल्य विवाह कर दिया जिवो नहीं at the second bal pradhan change in their lives and in the lives of entire community at the second bal pradhan child president she was the child president of our village she realized the need to set a positive example for other children in our village से सही समय अनुभव करथिला जे गोटे उदाहरण सृष्टि करिवो अदर गर्ल मानक पई अन्य झियो मानक पई तांको गारे रहउतवा झियो मानक पई and it was the village name was Hisla. The name of the village was Hisla. It was in Rajasthan. It is in Rajasthan, Alwar district. It was a long and arduous journey, but her persistence paid off. Her family finally called off her marriage, and she could continue her education. The journey was long and arduous. Arduous कहले कठिन बिले, दुसह थिला. से यात्राटा माने सहज नथिला. तार जो संघर्षटा सहज नथिला. ताकू बहुत कष्ट करिबा पड़िथिला. But finally her parents agreed. Her family called off her marriage. तो तार बाहा माने ठीक हो जाइतिला से बाहाटा फाइनली पोस्टपोन करा गला. She could continue her education. Inspired by the change she could bring about in her own family, she decided to mobilize other children to end the age-old tradition of child marriage in her village. तो तार जिते बेले बाहाघर बंद हो गला मानकु तांको गाँव रो अलगा झियो मानकु से मोटिवेट कला. तापरे से गाँव रे संपूर्ण बाल्य विवाह बंद हो गला. She could also stop her sister marriage and continue her fight against child marriage and घुंगट प्रथा. घुंगट प्रथा आम जानी आमर जो ओढ़णी एबे भी आमर कोस्टाल बेल्ट रे जिते नुआ बाहा होइके आसंती
माने दांडू को जदि कूओ को जीवे पानी आनिबा पे एते एते ओढ़णा दिया होची छाती पर्यंत ओढ़णा एबे भी दिया होची ए व्यवस्था एबे भी अछि मु नयागढ़ को बिलोंग्स करे मु जानि छी कोन केमती हुए तो प्रथा इट टुक ए ईयर टू ब्रिंग अबाउट द चेंज एंड द विलेज वुमेन जॉइंड हॉट टू स्पीक आउट एंड वॉइस देयर ओपिनियन है तो एटा कोन हला पिले इट टुक ए ईयर टू ब्रिंग अबाउट द चेंज गोटे कम से कम गोटे वर्ष लगिला से परिवर्तन आनिबा पई एंड विलेज वुमेन गार समस्त स्त्री जॉइंड हर टू स्पीक आउट एंड वॉइस देयर ओपिनियन तो ये पर्दा प्रथा अगेंस्ट से जेते बेले कहला ताकू वर्षटे लगिला वर्षटे परिश्रम करबा पे पड़ला आ वर्षे परे गार समस्त स्त्री ताकू सपोर्ट कले जे ये ठीक कहूची झीटा ठीक कहूची इन 2000 वर्तमान पायल कौन कौन सब प्राइज पाइला पिले इन 2013 2013 रे पायल वाज चूजन एज द जूरी मेंबर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज मिलिथिला ताकू केबे 2013 रे फॉर आवर वर्क इन हिंसला रे से करथिबा काम पे शी वाज आल्सो अवार्डेड द सावधान इंडिया सम्मान instituted by Life OK channel to award real life heroes who have helped create a safer society. इंस्टीट्यूटेड बाय लाइफ ओके द्वारा दिया जाउथबा सावधान इंडिया सम्मान भी ताकू दिया जाइतिला पिले को ईयर रे 2016 रे एंड यंग अचीवर अवार्ड बाय ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ब्रांड रिबक द्वारा 2017 मसीह रे को प्राइज मिलिथिला ताकू वर्ल्ड अचीवर यंग अचीवर अवार्ड कोन यंग अचीवर अवार्ड बाय ग्लोबल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस ब्रांड रिबक इन 2017 ऑन सितंबर 25 2019 सितंबर 25 2019 रे पायल received the goalkeepers global goal change maker award by the Bill and Melinda Gates Foundation. Bill and Melinda Gates Foundation द्वारा सितंबर 25 2019 रे ताको सबटर बड़ प्राइज मिलिथिला जोटा होतिला गोलकीपर ग्लोबल गोल चेंज मेकर अवार्ड आ एई प्राइज ता किए दउतिला बिल एंड मेलिंडा गेट्स बिल गेट्स तमे समते सुनिथिबा was just 17 and at the time she was just 17 now Hinsla is known as a child marriage free village अब वर्तमान से हिंसला होची गोटे चाइल्ड मैरिज फ्री गाँ से गाँ रे बाल्य विवाह नहीं सो द क्वेश्चन arises here why can't all the girls watching the class be a पायल जो माने भी देखुछ झियो माने तमे काहे कि पायल हेई पारिबो नाही तमे काहे कि तमे माने फाइट करी पारिबो नाही यस और नो सो दैट्स ऑल गाइस आसंता काली पुणी देखाओ सी यू देयर स्टे ट्यून्ड मास्टर इंग्लिश